the athletic Kangaroos, and we are live for another game here at the Fatima Cricket Ground in the TSL. A wonderful start by athletic Kangaroo Siddharth Shetty. He had a good first shot towards the third man, took a couple and then a single now. Played it well in the square leg region. That's a good start by Siddharth. Coming towards his next delivery, and the opening batsman Kamran Ahmed, who had come along with Varun Madnani, another wonderful batter this guy is. Plays the first delivery nicely. Some really good bowling by Zamir Sheikh, sticking to the basics. Coming towards his next delivery. Oh, this time. Good delivery. Played it well, Kamran, and that's the end of a very good first over. What a start by Zamir. The score after first over is 3 runs for the loss of 1 wicket for Quantei Titans. They've been asked to bat first today after Athletic Kangaroos won the toss and elected to field first. And there is the second wicket. Yash Harya strikes in his first over. That's a good catch taken. Kamran Ahmed, Siddharth Shetty, I beg your pardon, goes back to the pavilion. Another wonderful piece of bowling by the athletic Kangaroos, Siddharth Shetty. A very good batsman, his own accord. Plays it straight into the hands of the fielder and goes back to the pavilion. Yash Harya gets his first wicket in his very first over. What a poor start for Quantei Titans. They've been the leading teams in this tournament in their group, the A group that they represent. And this match has been a nightmare for them till now. Just the second over, they've lost 2 very important batsmen at the top of their order.
And we've got a new batsman on strike now. Karan coming to the bat with a score at 3 for 2. That's a very poor start. Jfsc getting his first wicket on the first delivery of his spell. What a start by both the bowlers. The first wicket was down on the first delivery of the first over, and the second was down on the first delivery of the second over. That's a wide. Quite outside the off stump and outside the wide mark as well. An extra added to the tally. And we got Karan on strike once again. Oh, and that's a good delivery. This time slightly short. Trying to cut that but missed that completely. What a delivery this time. Almost getting the edge. They've got a slip out there as well for the left-handed batsman. It's a wonderful piece of field setting by the captain of Athletic Kangaroos, Dromal Parekh as well. Oh, and that's a peach of a delivery. Driving him, forcing him to drive. Driving the batsman forward and making him miss that delivery. In the air, could have been another wicket, but goes to the boundary this time. That's a good start by Karan. Slightly uppish, but safe and in the gap. Plays it well through the covers for a boundary. He's off the mark nicely, and the score reaches 8 for 2 after 2 overs. End of the first over from Jfsc. Zamir bowling his second over. That's just the third in the innings. Good start. Get straight to the fielder by Kamran. This time the inside edge taking it away towards the boundary. And they'll come back for the third as well. This is really good running by both these players. In the air, and that time
away from the fielder. Could have been a catch, but was very lucky there. Karan, the left-handed batsman. Zamir Sheikh on fire. He started off brilliantly today. Got Varun Madnani out of the equation on the very first delivery. Couldn't have been a better start, especially when you have a batsman like Varun playing against you and cleaning him up. Kamran on strike. Zamir to Kamran. Short delivery. Kamran plays it really well. A flat batted slap there. That's a boundary towards the onside. Played wonderfully well towards the cow corner. That's a short delivery and pulled it really well. Kamran. Not a good delivery by Zamir. Missing the length completely there. Very short and allowing the batsman to just play it aerial on the onside, and a boundary added to the score. So 16 for 2 now. And the keeper is up now. Oh, and this time in the air could be a big one. Oh, and that's a huge one. Wow, that's a big 6. Wide off, long off. What a shot that is by Kamran. He's such a stroke player, this guy. Zamir being given some treatment here for bowling really foolish deliveries. The last one was a very short one, and this time he goes full and goes out of the park. Kamran is on fire. Oh, and this time wraps him on his pads. And that's the end of the third over. 22 for 2. An expensive over comes to an end by Zamir. 14 of that over. 13 of them by Kamran. And the score is 22 for 2 after 3. Yash Haria back in the attack with his second over. What a wonderful shot. That will be a single only. There's a fielder out there, but that was a good shot by Karan. Pitching it up Yash on that occasion. Coming to bowl his next delivery. Oh, and he misses that, trying to hit the big one. Misses that completely. Was aiming the extra cover region again this time. Oh, and that's a brilliant piece of bowling. Yash Haria bang on target this time. Very close to the off stump. Oh, and this could be another big one. That's a huge one. A big 6 straight down the ground.
What a shot that is by Kamran. That was pitched up and a flat batted hit, but went really high in the skies up there, and the long shot as well. So a brilliant six by him. What a comeback by Kamran after two good deliveries by Yash. There's some good contest happening between Kamran and Yash today. Oh, and that's a wonderful delivery to come back. So a good cat and mouse battle happening between the bowler and the batsman. Let's see who gets the better of whom. Till now Kamran has the upper edge after he's hit Yash for a huge six. Oh, and this time again. This could be another big one. That's a huge six again. Wow. This guy is on fire. Plays it in the air over covers for a big six, and that's the end of the fourth over. 35 for 2. What a batsman this guy is. Kamran Ahmed. Yash Haria being dealt with severely, and so was Zamir Sheikh by Kamran. 35 for 2 after 4. Hirak Shah coming into bowl. He starts out really well. And a dot delivery. He's trying to take the run, but say no eventually to that run. That's a good delivery again. No run taken. This time again by the batsman. In the air, and that will be a boundary. There's no fielder out there above the point. What a shot that is. Karan plays a wonderful shot this time. The width on offer, and he plays a brilliant shot. And this time towards the onside. Plays it well. The square leg trying to chase it. And this will be a boundary again. So Karan is on fire at the moment. He's playing some really good shots right now. And not a good piece of bowling by Hirak. Straying down the leg side this time on his pads, and he does really well to achieve another boundary.
and a single taken easily this time, playing it towards the cover point region, and Kamran back on strike. That's a good delivery, and he's taken a quick single to end the over. That's a good over. 5 overs have been bowled, 45 for 2. And that's a good start by Quantei Titans after they lost 2 wickets early in the innings. That's a very good comeback. And you've got Zamir Sheikh coming into bowl his third over. That's a good shot by Kamran, but straight back to the bowler, hitting the stumps at the non-striker's end. That's a good shot, and this will be a boundary. Wonderfully played. Oh no, there's a fielder out there, just a single. But that was such a good shot. They placed a fielder specifically for that shot, but still he could find the gap. Kamran Ahmed is such a wonderful batsman. He's from 27 all of a sudden. He's played just 15 deliveries. What a player this guy is. Started off brilliantly after 2 wickets were lost early in the innings as well. So what a comeback by him.
a wonderful shot, will be another boundary. Kamran is on fire today. A short delivery by Zamir, again giving him the chance to hit a shot of his liking. He's so good at the pull shot. We've seen that earlier as well. Zamir not learning from his mistake, and the 50 is up in just the 6th over. What a start by Quantei Titans, and what a comeback by them. Zamir Sheikh being dealt with severely here. And this time another boundary. Just pulls it towards the deep mid wicket for a boundary again. Kamran is on fire. He's playing a gem of a knock here. Already on 35 of just 17 deliveries. What a player this guy is. There was no cushion on the onside. And this time he lashes onto it again for a boundary. Wonderfully played by him. 2 boundaries on 2 deliveries. And this time he's again missed it. Is that a boundary? Is that an edge? It seems yes, that's an edge. So 3 boundaries in a row, and this time the keeper misses that. It would have been a very good catch, but these catches don't come easily. And the 6th over comes to an end. Another expensive over by Zamir. 59 for 2. All of a sudden the run rate has reached almost 10 runs an over. And we'll be back. Hindi commentary now. We'll switch to the Hindi commentary as always we do in the TSL matches. We present the Hindi commentary as well to all the viewers, the stay tuned viewers. 59 for 2 after 6 overs. Will that be a boundary here? It seems yes. The first delivery being played towards the fine leg for a boundary, and allow us to switch to the Hindi commentary now. स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों श्रोताओं का। बेहतरीन मैच हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर द सुपर लीग TSL में। मैं शालीन गुप्ता एक बार फिर से आपके समक्ष हिंदी कमेंट्री लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अक्षय तुंगारे आए अपना पहला ओवर डालने में, पहली गेंद पर चौका लगा। करण बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 पर खेल रहे हैं 14 गेंदों के बाद, लेकिन तारीफ यहाँ पर कामरान अहमद की सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। 39 पर आ गए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों के बाद, और क्या स्ट्राइक रेट लेकर चल रहे हैं। 200 के भी ऊपर का स्ट्राइक रेट, और दूसरे ओवर में 2 विकेट गिर गए थे। 7 गेंदों पर 2 विकेट पेवेलियन जा चुके थे। बेहतरीन गेंदबाजी अक्षय द्वारा, LBW की अपील, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर निर्णय दिया है अंपायर ने। अंपायर यदु चूरी, बहुत ही ज्यादा अनुभवी अंपायर। स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद और सही निर्णय भी था। अपील बहुत अच्छी थी। बैकफुट पर करण को बांध दिया था, पैड पर गेंद ली थी उन्होंने।
किया और एक भी रन नहीं। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। और इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से बांध दिया, आउट नहीं दिया अंपायर ने। वापसी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद 7 ओवर में 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 5 रन दिए इस ओवर में अक्षय ने। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर रौनक शाह द्वारा, एक और बेहतरीन खिलाड़ी जबरदस्त दल में एथलेटिक कैंगरूज। पहली गेंद अच्छी और स्ट्राइक पर करण चूके इस बार कामरान बहुत देर से स्ट्राइक पर नहीं आया, तो यहाँ पर कोशिश रहेगी करण की कामरान को स्ट्राइक में जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा हो सके। उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है कभी कभी लय में जब होता है बल्लेबाज। ये देखिए फिर से बेहतरीन गेंदबाजी और जाने दिया उसे समझ कर कि वाइड होगी, लेकिन वाइड नहीं थी ये गेंद और चूक गए। अगली गेंद रौनक की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, इस बार तेजी से रन लिया कामरान ने और सफल भी हुए। जी हाँ, कामरान भी स्ट्राइक पर आने के लिए उतावले थे और इस बार ले लिया स्ट्राइक उन्होंने। शॉट मारने का प्रयास, लेकिन डीप विकेट तैनात है इसी शॉट के लिए। बेहतरीन शॉट, लेकिन रक्षक के हाथ में बैकवर्ड पॉइंट पर एक भी रन नहीं है। क्या बढ़िया ओवर डाला है पहला ओवर रौनक शाह ने। 8 ओवर में 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी यहाँ पर एथलेटिक कैंगरूस गेंदबाजों
बेहतरीन शॉट, बड़ा छक्का है ये, जबरदस्त। क्या बल्लेबाजी करते हैं। और देखिए बहुत देर से स्ट्राइक पर नहीं थे और जैसे ही स्ट्राइक पर आए यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा एक बार फिर से शुरू। बड़ा छक्का लगाया, कोई भी मौका नहीं वहां पर ऑफ के क्षेत्ररक्षक के पास। दर्शकों की तरफ से गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देखते रहे। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं अक्षय। बहुत बेहतरीन वापसी यहाँ पर, लेकिन विकेट कीपर ने यहाँ पर गेंद नहीं पकड़ी और चूक हो गई। 4 रन फिर से मिल गए। इस बार बाय का चौका मिला है, पूरी तरीके से छोड़ दी थी गेंद। कामरान ने बेहतरीन गेंदबाजी थी अक्षय के द्वारा, विकेट कीपर की चूक हो गई। लेकर आ रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी अक्षय के द्वारा। एक और अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी। बहुत सीधे बल्ले से खेला, कामरान की खासियत है, सीधे बल्ले से खेलते हैं। 46 पर आ गए हैं सिर्फ 24 गेंदों के बाद। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने, जबरदस्त छक्के लगाए आज। ये देखिए एक बार फिर से बड़ा शॉट, ये भी छक्का है। जी हाँ, बहुत बड़ा छक्का, क्या खेल रहे हैं। और ये अर्धशतक पूरा किया एक बड़े छक्के से कामरान ने। जबरदस्त बल्लेबाजी, सीधे खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से। एक और बड़ा छक्का। गेंद ही खो दी उन्होंने, गेंद बुलाई गई है। जी हाँ, 9वां ओवर चल रहा है इस पहली पारी में। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही कामरान के बल्ले से। 52 रन सिर्फ 24 गेंदों पर। अगली गेंद इस ओवर के आगे बढ़िया अंदाज में उसे जाने दिया और एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज की निशानी है कि ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए, अच्छी गेंदों का सम्मान भी करना चाहिए। 9 ओवर के बाद 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ, बने रहिए हमारे साथ। और ये 10वें ओवर की शुरुआत, यहाँ पर रनआउट का एक मौका था लेकिन चूक गए। क्षेत्ररक्षण और बेहतर हो सकता था यहाँ पर। रन फिर भी खेलने के लिए पूरी तरह से अग्रसर थे कामरान, स्ट्राइक पर आना चाहते हैं। और जब इस तरह के फॉर्म में हो कोई बल्लेबाज ताबड़तोड़ पारियां खेल रहा हो तो वो ज्यादा स्ट्राइक लेना ही चाहता है। कामरान की भी वही मंशा, उनके भी
शॉट, 4 रन, जबरदस्त प्रहार। ऊपर की गेंद, आगे की गेंद इनको देंगे तो यही हश्र होगा। कवर्स के क्षेत्र में खेला, ताबड़तोड़ प्रहार किया 4 रन के लिए। हवा में थी गेंद लेकिन क्षेत्ररक्षक से काफी दूर, कोई मौका नहीं। और इस बार एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में ताबड़तोड़ शॉट, करारा प्रहार, 4 रन। क्या बॉटम हैंड है इस खिलाड़ी का, जबरदस्त प्रहार। ये देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, 60 रन पर आ गए सिर्फ 29 गेंदों के बाद। जी हाँ, ये नाइटमेयर साबित हो रहे हैं। बाहर नहीं दे सकते, अगर आप विकेटों के बाहर डालेंगे तो ये
शाह आए अगला ओवर लेकर। 11वां ओवर इस पहली पारी का। बढ़िया शॉट करण के द्वारा, बॉस की दिशा में 1 रन दिया खेलकर। बढ़िया गेंदबाज है वीरेन, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी। गेंद और बढ़िया शॉट खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 ही रन। बढ़िया शॉट, एक बार फिर से तेजी से 1 रन लिया। करण आगे 25 पर 27 दिनों के बाद, कामरान 61 पर 31 दिनों के बाद। और ये खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर 1 रन होना चाहिए था। कामरान के खाते में एक और चौका। वीरेन शाह खुश नहीं है बिल्कुल भी। जी हाँ, आसानी से 1 रन ले सकते थे, लेकिन क्षेत्र रक्षक ने वहाँ पर चूक करी और 3 अतिरिक्त रन दे दिए। चौका दे दिया यहाँ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। शॉर्ट ऑफ वुडलैंड गेंद थी और उसको पंच किया था। वीरेन की अगली गेंद, छोटी गेंद इस बार, और ये बड़ा शॉट है, जबरदस्त प्रहार, और ये बड़ा छक्का और 100 रन पूरे हैं यहाँ पर इस दल के। कामरान क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह। जी हाँ, धीमी गेंद डालने का प्रयास, स्लोअर डिलीवरी इसे कहते हैं, और कामरान ने उसे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। तैयार थे इस गेंद के लिए, और इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर। बड़ा छक्का इस बार कामरान के बल्ले से। वीरेन शाह को स्तब्ध कर दिया इस तरह से शॉट लगाया इन्होंने।
ले भी लिया आसानी से। जबरदस्त प्रहार और यहां पर 1 रन मिलेगा। आउट की अपील की ध्रुमल ने 1 रन ले लिया क्योंकि अंदर ही थे क्रीज के करण। बेहतरीन शॉट था लेकिन शॉट। एक बार फिर से 2 रन लिए लगातार दूसरी बार। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों से। 100 रन से भी ज्यादा की ये साझेदारी हो चुकी है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर। ध्रुमल पारी का पहला ओवर है, कप्तान है इस दल के, 7 रन दे चुके हैं अपने पहले ओवर में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और गैप में खेला है तो 1 ही रन होगा, दूसरे के लिए नहीं आएंगे इस बार। बढ़िया क्षेत्र रक्षण और ये ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद खुद 112 रन 2 विकेट 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विराम लेकर वापस आपके साथ जुड़ेंगे और अब अंग्रेजी कमेंट लेकर वापस प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। बने रहिए हमारे साथ।
comeback by them. They were 2 wickets down. First delivery of the second over. They lost Varun Madnani on the very first ball of the match, and Yash Haria took a wicket in his very first over. And after that, it has been all Quantei Titans throughout the match till now. 117 for 2 in just 12.1. Almost 10 runs an over is the current run rate. Hitesh coming to bowl his first over and being greeted to the boundary in the very first delivery. That time, will that be a boundary? It will be another boundary. What a shot that is. He's on fire, Karan. What shots are they playing? Wonderfully crafted innings by both of them, especially Kamran, and Karan now coming into the act as well. He was silent for a bit of short period in his innings. Now he's coming back into action, and 2 boundaries in this over. What a shot that was through the covers for on the boundary. There was no fielder out there. Played it deliberately in the air. Gets another boundary for himself. Hitesh with 3 balls and he's been hit for 2 boundaries. Both of them on the offside. What a wonderful sight this is to watch these batsmen play with a straight bat and in the weed throughout the innings. The captain Abhimanyu Khanna would be a happy man for sure. He's got a very strong side in this TSL this year. One of the contenders to win the cup as well, but another good shot this time. Just a single. There's a fielder out there. They will not take the second run. What a shot that is. Another boundary. This time to Kamran, pitching it up again and playing it straight down the ground for a boundary again. 1 bounce into the fence. Kamran is on fire. He's middling almost everything that he's getting in his range. No matter what length or line you ball, Kamran will send it out of the park. Has been dealing in boundaries right throughout his innings. Oh, and this time a good delivery by Hitesh. Comes back nicely, but already 3 boundaries of this over. So very expensive over to start his spell. 14 of that over. 13, I beg your pardon. The score is 13 overs, 126 for 2. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Parekh may get a wicket here. He has dropped it. Oh, and that's a tragedy happening there. And he is not happy at all. Look at his reaction, the captain. Almost got a wicket and a very important one. Viren Shah lets it go. Sloppy cricket there by athletic Kangaroos. Parekh, the captain, coming to bowl his second.
second over, the first delivery. He almost got a wicket there, but not to be. As short third fielder drops that catch, and he's played that nicely. There should be a single. There's a fielder out there, the sweeper cover. Jfsc Tsl. This could be a big blow to athletic Kangaroos, dropping Kamran. He'll almost reach 40 from just 37 deliveries. Already his partnership is more than 120 runs. Wonderful shot. This will be a boundary over and above the point fielder. There's no chance for any fielder out there. They are just toying away with the bowling here. Both these players, especially Kamran. Comes down the track. Could that be a big one, or will that be caught? It's in the gap, and he's coming back for the second. Playing shots at will now, wherever and whenever he wants to hit it in the air. He's doing that really nicely. Wonderful piece of bowling by Tsl. He's making Kamran with a big shot. That is the way you have to bowl to him, in the right channel. Some of the other time he'll definitely make that mistake. Oh, and he could this time a lot of width offered, and what a shot. That is a huge six. Wow. Kamran is on fire. He's entered the 90s with that shot. Brilliant shot again. He has lost few balls here today for sure. For the organizers, what shots is he playing?
down the ground precisely. Well there, just restricting towards the single, to a single. Second run this time, wonderful piece of work there by both these players. 2 runs taken easily. It is a soft hands that time. Shot will be a boundary. That is the boundary. He's played it so well again. Such a solid bottom hand. He's reached 98 in no time. 46 deliveries. 15 overs, 148 for 2. Kamran about to get a wonderful century in that too. Less than 50 deliveries. Wow, what a player this guy is. 98 of 46. That has been a chanceless innings, to be honest. No catch drops, nothing. Just played wonderful shots.
almost got in there. What a delivery that was. Kamran. Very lucky that time. Survives on 99, but what a delivery by Ronak Shah. He bowled a peach of a delivery to end his third over and scored his 152 for 2. At the end of 16 overs, Kamran still on 99 on 49 deliveries. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Last 4 overs remaining. Coming to bowl his next over and he gets an edge this time, Karan. This will run away to the boundary. Third man region. Very fine from the fielder who was standing as a short third man. Beats him and that's boundary in the first delivery. He's played well. Karan deserves a 50 here for sure. Oh, and that's a big one. This could be a big one. Will that be caught? Oh, he's dropped it. He has dropped the sitter. That was in the air for a long time, but these catches need to be taken. That would have been back into the pavilion. He survives on 47. He's now on 48. A single taken. Kamran on strike now. Would definitely be looking for that single. Time he takes the single and brings up his century, coming back for the second as well. And that's a fantastic 100 by Kamran. Just have a look at that celebration by him. Elated this guy, and what a century this is. 101 of just 51 deliveries. What a player this guy is, being applauded by not only his teammate from the dugout but also his partner at the non-striker's end. A wonderful knock and kind of shots he's played. Very high quality player. We've seen him play some really epic knocks in various tournaments in the circuit. Oh, and he's cleaned him up on the very next delivery. So Yash Haria showing his class as well. And Kamran has been cleaned up after the century. He was trying to hit every ball, a big one, and understandably. And what an innings, and being applauded by and appreciated by his opponents as well. And what a knock by him. 101. Epic century by him. The captain, and he almost got out on the first delivery itself, trying to hit the big one. He's the captain of Quantei Titans, another wonderful player to come at this point in time. This is a 17th
over, 159 for 3. Who better than Abhimanyu to be at the crease? But he was completely beaten. The first delivery plays it nicely this time, and this time a chance for a run out. He's gone. Karan, short of a half century, 2 runs. Only he required to bring up a wonderful half century. He's got run out there, and Abhimanyu Khanna playing it straight into the hands of the fielder and trying to take that single quickly, but this time the throw was bang on target, and the wicketkeeper did really well to take off the bails very quickly. And Karan, after playing a wonderful knock, goes back to the pavilion on 48. Misses a well-deserved half century this time. To switch to the Hindi commentary for the last 3 overs. We'll be back after a quick break. Stay tuned. स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का। 3 ओवर बचे हैं इस पहली पारी में। रौनक शाह हैं गेंदबाजी डालने अपना आखिरी ओवर। अभिमन्यु खन्ना स्ट्राइक पर बेहतरीन शॉट, लेकिन एक ही रन होगा। रक्षक मौजूद है सुपर कवर के क्षेत्र में। उमर खान आए हैं नए बल्लेबाज, एक से एक जबरदस्त खिलाड़ी इनके इस क्रम में। क्वांटाई टाइटंस खतरनाक टीम, बेहतरीन दल। क्रिकेट के मैदान पर तो ऐसा लगता है कि ऐसे सब शिकार करने निकले हैं। शेरों का जो दल होता है, एक से एक बल्लेबाज इनके दल में, एक से एक। बेहतरीन शॉट, एक बार फिर से 4 रन आते ही उमर खान ने पहली गेंद पर अर्जित किए। और एक और बेहतरीन शॉट, एक बार फिर से 4 रन मिलेंगे। 2 गेंदों पर 2 चौके, और इस बार छोटी गेंद थी, बैकफुट पर आकर कट किया इसे पॉइंट के क्षेत्ररक्षक के पास से 4 रनों के लिए। आते ही हाथ खोलना शुरू कर दिया है। 2 ही गेंद खेली है और 2 चौके, और ये बड़ा छक्का है। वाह, कितना लंबा और बड़ा छक्का है, आज का सबसे बड़ा छक्का। सीधी गेंद थी और लंबी गेंद डाली इस बार, और जितनी लंबी गेंद थी उससे ज्यादा बेहतरीन शॉट था ये। बहुत ही दूर भेज दिया इसे, सीमा रेखा के पार तो गया ही, एक मैदान के भी बाहर चला गया। और आज बहुत सी गेंदें खो दी हैं। ऐसे बड़े बड़े शॉट्स लगाए हैं क्वांटाई टाइटंस के बल्लेबाजों ने, खास करके कामरान ने। उमर खान भी लगता है उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हालांकि अपने आप में बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी। और इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन कीप इन विकेट पर 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। महंगा ओवर बहुत ज्यादा, ये 17 रन इस ओवर
से आए। जी नहीं, एक गेंद बची है, क्षमा चाहेंगे। Check. Hello.
दोबारा, और ये वाइड गेंद और ये 4 रन। ताबड़तोड़ यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है और ये देखिए 197 रन पर पहुंच गए हैं। और दर्शकों से क्षमा चाहेंगे थोड़ी सी तकनीकी खराबी के चलते बीच में करीबन 1 ओवर तक हम कमेंट्री आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बल्लेबाजी कर दी है उमर ने। यहाँ पर हर गेंद पर चौका या छक्का लगा रहे हैं। 197 पर 4 रन हो गया स्कोर। 7 गेंदें अभी भी बची हैं और उमर खान को देखिए 30 रन 8 गेंदों के बाद, क्या बल्लेबाजी, यानी अपना अर्धशतक भी पूरा कर सकते हैं अभी। जमीर शेख, बहुत ही महंगा ओवर उनका ये आखिरी ओवर और ये आखिरी गेंद। बेहतरीन शॉट, एक बार फिर से 4 रन होगा। जी हाँ, क्षेत्ररक्षक ने कोशिश अच्छी की लेकिन क्या बल्लेबाजी है ये। उमर खान ने अपने दल के स्कोर को 200 के ऊपर पहुंचा दिया है। 34 पर आ गए हैं सिर्फ 9 गेंदों के बाद। जो कामरान और करण ने शुरुआत दी थी 2 विकेट गिरने के बाद, जो वापसी की थी उमर खान, उसको और ऊपर लेके जा रहे हैं। क्या शॉट लगा रहे हैं, एक से एक तगड़े और खतरनाक शॉट, और सारे शॉट्स या तो आसानी से सीमा रेखा के पार जा रहे हैं या फिर गैप में, तो कोई मौका नहीं है किसी के पास यहाँ पर। और जमीर शेख का पिछला ओवर कितना महंगा ओवर, 26-27 रन आए इस ओवर में। 3 चौके, 1 बड़ा छक्का, वाइड के 5 रन। उनके सारे समीकरण यहाँ पर खराब हो गए, सारे आंकड़े जो थे धराशायी हो गए गेंदबाज के तौर पर। यही गेंदबाज ने पहली ही गेंद पर वरुण बंदानी को आउट क्लीन बोल्ड किया था। तो क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल हम देख सकते हैं। इसी गेंदबाज की पहले ओवर में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल बदल गई आखिरी ओवर में। इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई उमर खान ने, और अब वीरेंद्र शाह आए इस पारी का आखिरी ओवर डालने। 201 हो गया स्कोर और कम से कम 15 रन तो चाहेंगे इस ओवर में। अभिमन्यु खन्ना और उमर आकर बड़ा शॉट यहाँ पर खेला अभिमन्यु ने, क्या ये आउट हो जाएंगे? जी हाँ, क्या बढ़िया कैच लिया है, तारीफ करनी होगी वीरेंद्र की। बहुत ही मुश्किल कैच बहुत आसानी से ले लिया और अभिमन्यु खन्ना ज्यादा खास कुछ नहीं कर पाए। 2 रन बनाए 6 गेंदों पर और वापस पेविलियन की तरफ आते हुए। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ। आखिरी 5 गेंदें बची हैं। वीरेंद्र शाह लेकर आ रहे हैं अगली गेंद स्वप्निल के लिए। स्वप्निल आए हैं नए बल्लेबाज। पहली गेंद खेलेंगे अपनी स्वप्निल, वीरेंद्र की आखिरी ओवर की दूसरी गेंद। अब बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट, क्या ये छक्का है? जी नहीं, ये तो 2 रन होगा। आसानी से 2 रन लिए वहां पर स्वप्निल ने। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था।
अच्छा शॉट, 1 रन लिया लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर। अगली गेंद वीरेन की, उमर खान स्ट्राइक पर, बेहतरीन गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने के लिए कोशिश की उमर ने, लेकिन मौका नहीं दिया और बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। थ्रो देखिए कितना सही, 1 ही रन लिया। अच्छी गेंदबाजी है लेकिन बढ़िया शॉट भी है, 1 ही रन मिलेगा हालांकि। अच्छा थ्रो और ये रन आउट। उमर खान एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट होते हुए, और 20 ओवरों की समाप्ति भी हो गई है यहाँ पर। अंतिम स्कोर है 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रन 6 विकेट के नुकसान पर और 208 का लक्ष्य दिया है यहाँ पर क्वांटाई टाइटंस के बल्लेबाजों ने एथलेटिक कैंगरूज के बल्लेबाजी क्रम को। और करीब 10 मिनट के बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे दूसरी पारी में। बेहतरीन बल्लेबाजी क्वांटाई टाइटंस के बल्लेबाजों के द्वारा। उमर खान 36 पर आउट हुए 11 गेंदों के बाद सिर्फ, और कामरान का बेहतरीन शतक, आज एक बहुत ही दर्शनीय शतक लगाया उन्होंने। थोड़ी देर में आपके साथ वापस जुड़ते हैं दूसरी पारी में, बने रहिए हमारे
And we are back live with the second innings here. Umar Khan starting off the proceedings. And 208 is the target that the Kangaroos have to achieve today to win this match. Sanjay Shukla, a wonderful batsman. A flamboyant cricketer on strike. Akshay Tungare is his opening partner. So, a brilliant opening pair for the Kangaroos as well. That's a good start by Sanjay and a single taken to open his account. They're off with a single here. The Kangaroos. That's a good start by Umar Khan. He's played the gem of a knock towards the end of the first innings. And a quick single taken by Akshay as well. So both the batsmen are off the mark now. Another good delivery, and that's a good start by Umar Khan. Four deliveries bowled nicely. With three till now on the board. Oh, and that's a wonderful Yorker. A brilliant ball. A good comeback after he bowled that wide. Oh, and that's a wonderful shot in the first boundary in the second innings. Sanjay Shukla, you can't keep this batsman silent for long. What a shot that is towards the onside. And the first over has been bowled 7 without loss. That's a wonderful start by Sanjay. And we take a quick break and back, so stay tuned, viewers. Subhash Kumar being introduced into the attack with the new ball. Starts off well. A single taken by Akshay. Sanjay back on strike. And this match is very important in the context of the standings in the tournament, especially for Quantei Titans. Oh, and that's a good delivery. Yes, they were the runners up last time in this wonderful tournament. If they lose this match, they could be ousted. After the Kangaroos lose this match, they could be ousted as well. So, a virtual quarterfinal. What a shot that is by Sanjay Shukla. He's such a wonderful batsman, this guy. He just rocks on the back foot and plays it brilliantly towards the covers for a boundary.
and this time goes aerial and could be another boundary. One bounce into the fence. Beautiful shot once again. And taking full advantage of the restrictions. Sanjay Shukla. 9 already of the over. Just 4 deliveries have been bowled till now. And the run rate required is quite a high run rate. More than 10 runs an over, almost 10.5 an over they require to win this match. Currently they are at 9.6, so they've started off well. But they need to maintain this ante throughout the 20 overs. That's a good comeback by Subhash. Quicker one. Sanjay just playing it nicely towards the fielder at the point region. Last delivery of his first over. Oh, and he's played it deliberately in the air. Oh, he's dropped it. He has dropped a very simple catch and a single taken as well. So, not at all a good piece of fielding by the fielder out there. Could have been the first wicket for the Quantei Titans, but Athletic Kangaroos and Sanjay Shukla lucky at this point of time. And the second over has been bowled 17 without loss. He's dropped a simple catch. The point fielder. Sanjay Shukla, you cannot drop this player. He's such a wonderful bat, this guy. He keeps going. He makes this match a nightmare for the bowlers. But that was a good delivery by the bowler Subhash Kumar. He almost got his first wicket. Very unlucky to have not got the wicket due to some sloppy bit of work there by the fielder. At the point region, Umar Khan coming into bowl his next over. Oh, and this time in the air again. And above the fielder. A single taken easily. So he's playing aerial shots. Not getting the right timing. Sanjay Shukla again flirting with danger this time. Oh, and that's a good delivery. Very well bowled by Umar. Another good delivery, a good comeback by Umar. He's bowling a very tight line, just in and around that off stump. Akshay Tungar is also a wonderful batsman to watch. And when he's on song, it could be tough going for the bowlers, but right now Umar Khan on top. And that's a good delivery again. He just lets it go. Akshay. Oh, and that's a good delivery. Came back in sharply into the right hander. A single taken easily. A wonderful piece of bowling by Umar Khan. He's been wonderful today, not only with the ball, but what batting did he do? Amazingly well. Oh, and that's a good delivery again. He's cut that nicely and in the gap as well. Oh, and that could have been stopped. That's a boundary. Sloppy bit of work again by the fielder. Kamran this time. The Centurion messes that up, and that's a boundary. 3 overs have been bowled. 23 for no loss. And a good over. Spoiled by that boundary. On the last delivery. Could have been just a single, but slightly sloppy by the fielder at mid-off. That's the end of the third over. 23 without loss. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
first over. He's been introduced into the attack. That's a good shot by Akshay. Straight to the fielder. Starts with the dot, Rohit. That's a wonderful start by Athletic Kangaroos. 23 without loss in just 3 overs. It's a good run rate that they've started with. That's a wonderful piece of bowling. Lets it go again, Akshay. Oh, and that should be a dot delivery again. He's trying to hit that. That was quite full, just outside the wide mark, but went beneath the bat. So wide not given there. That was a good decision by the umpire. Rohit Kar putting a wonderful first over. 3 dots he started with. Akshay Tungare now probably will have to do something so that the over doesn't get wasted here as a batsman. Oh, and what a peach of a delivery this is. Akshay Tungare beaten all ends up. Rohit Kharb is on fire. The tall pace bowler here. Bowling a wonderful line and a beautiful length. A start by Rohit Kharb to his spell. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Subhash Kumar coming to bowl his next over. This is the 5th in the innings. Oh, and this time in the air, will that be a boundary? That's a wonderful stop by the fielder. Rohit Kharb again into action. Does really well. Just a single again. Another single taken. That's a good over by Subhash till now. 3 deliveries and 3 runs only till now in this over.
shot will be a boundary. It's a wonderful piece of batting by Akshay Tungare. That is what he's capable of, this guy. Just guides it in the gap. It goes towards the boundary in the third man region. 5 overs have been bowled, 32 without loss. Run rate 6.4 per over. We'll take a quick break and be back from the staging views. Coming to bowl his next over. On strike is Sanjay Shukla, who's played really well till now, 21 of 14. That's a wonderful shot, will be a boundary. What a shot that is. Straight as a bullet. Race to the boundary. No time. Brilliant shot played by Sanjay Shukla. Probably the shot of the evening. If you consider the ground shots that have been played today, would it have been a straight shot? Straighter shot as compared to the one that was hit by Sanjay right now. He's trying to make up for the lost deliveries. Oh, and that's a wonderful shot again. A short delivery. He's pulled it brilliantly towards a deep backward square leg for another boundary. He's on fire, this guy. Two boundaries in just two deliveries he's faced. With curve under pressure. He's trying to make up for the lost deliveries. He started off so well. The run rate again at 7.5 runs an over. So 3 boundaries in the last 3 deliveries. 1 by Akshay Tungare on the last delivery of the previous over. And 2 by Rohit Karve. He's coming to bowl his next. On strike is Sanjay again. Oh, and this should be the first bouncer for the over, it seems. That's what the umpire has signaled. Oh, and that's a good delivery. Taking the inside edge, and was lucky that the ball did not go and hit the stumps. What a shot that is! There's a player in the deep, a fielder doing well there, Kuldeep. Another single added to the tally, 9 of the over. Stops it, but that's the end of the 6th over. The score is 42 without loss. That's a good start by both these players. 7 is the current run rate, and they require almost 12 runs and over now to win this match. For the next 14 overs, it will be not an easy task by any means. We take a quick break and be back from staging view.
he's missed that. He's trying to hit the big one. That's a boundary. Should be wide. Bias, I beg your pardon. Did not take the bat. Not 4 runs added to the tally. स्वागत करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का हिंदी कमेंट्री लेकर एक बार आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए हैं हम। 48 बिना किसी नुकसान के बेहतरीन शुरुआत एथलेटिक कैंगरूज के द्वारा भी जबरदस्त मैच में, जो कि एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह है। और इस बार 1 रन आसानी से मिलेगा। शॉट सुपर कवर के क्षेत्र में 1 रन लिया। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद स्कोर है 49 रन। एक भी विकेट नहीं गिरा है अभी तक। बढ़िया शुरुआत, लेकिन रन रेट बहुत ज़्यादा चाहिए। आवश्यक रन प्रति ओवर 12 रन के ऊपर हो गया है अब। रन गति बढ़ानी ही होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। दोनों ही बल्लेबाज सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्यकांत को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। लेग बाय से स्ट्राइक वापस संजय के पास आ गई। 50 रन पूरे हो गए हैं इस दल के लेग बाय के बाद। बड़ा शॉट इस बार खेलने का प्रयास, और बेहतरीन प्रयास। 6 रन। जी हां, डाउन द ट्रैक। जैसे ही गेंद ने बल्ले का संपर्क लिया, सीधे सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में। जबरदस्त प्रहार, और ये छोटी गेंद, और इसे पूरी तरह से चूक गए मारने में। संजय शुक्ला के पास बहुत बेहतरीन शॉट्स हैं। चतुंगारे भी जबरदस्त बल्लेबाज हैं। संजय शुक्ला बल्लेबाजी क्रम में एक अलग ही तेजी लाते हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं। और यहां पर ये चूक हो गई सुभाष कुमार से। दूसरे रन के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन मना किया। और ये ओवर की समाप्ति, सीधा कैच दे बैठे गेंदबाज को ही। जी हाँ, पहला विकेट गिरता हुआ 58 के स्कोर पर। अक्षय पेवेलियन की तरफ वापस जाते हुए
गेंद पर बड़ी अपील स्वप्निल की, लेकिन आउट नहीं दिया अंपायर ने। लेग स्टंप पे बाहर जा रही थी ये गेंद, ऐसा ही दर्शाया अंपायर ने भी। बहुत ही मजे हुए अंपायर, बहुत ही अनुभवी अंपायर ओम सिंह क्षमा चाहेंगे। जबरदस्त अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों अंपायर्स। अच्छी गेंदबाजी। बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरीके से चकमा दे दिया यहाँ पर, छका दिया जिगर को। और बढ़िया बल्लेबाज है जिगर सोनी, लेकिन और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक ही रन। स्वप्निल का बेहतरीन ओवर, सिर्फ 1 रन दिया है 5 गेंदों में अभी तक, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट भी झटका है। बेहतरीन ओवर की समाप्ति सिर्फ 2 रन इस ओवर से, और 9 ओवर के बाद स्कोर 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सूर्यकांत आए अपना अगला ओवर लेकर, और बेहतरीन गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास संजय का, चूक गए। मजेदार अच्छा शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा। क्षेत्ररक्षक तैनात है वहां पर पहले से, नवलदीप। बेहतरीन गेंदबाजी। एक रन लिया आसानी से इस बार, लेकिन एक रन से कुछ खास हो नहीं पाएगा, तो बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 10वां ओवर चल रहा है, सिर्फ 62 रन है, बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं अभी। 150 रन के लगभग रन चाहिए, 145 रन। और ये जबरदस्त गेंदबाजी, और आउट। सूर्यकांत की तारीफ करनी होगी, क्या जबरदस्त लेग स्पिन गेंदबाजी है, और विकेट कीपर को एक आसान सा कैच दे बैठे, और वरुण मदनानी ने भी बहुत बेहतरीन कैच लपका। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ, सूर्यकांत का पहला विकेट, 62 पर 2 हो गया स्कोर। के निर्देश अंपायरों के, एक विराम लेकर वापस आपके साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
और ये बच गए, पहली गेंद पर कैच दे बैठे। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने। अभी ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के बाद स्कोर है 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शाह पहली गेंद पर 1 रन तो लिया इन्होंने, लेकिन हवा में खेली थी गेंद, मुश्किल में पड़ सकते थे। में खेला हुआ शॉट, 1 ही रन मिलेगा। जी नहीं, ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर, चौका भी हो सकता है। जी हाँ, बेहतरीन शॉट हो गया ये तो रौनक के द्वारा। यहाँ कोई क्षेत्र रक्षक नहीं था और तौसीफुल खान ने आगे की गेंद रखी थी। अच्छा शॉट तो खेला कवर्स में, चौका भी लिया यहाँ पर। क्लीन बोल्ड, यहाँ क्रॉस बैटेड शॉट खेलने गए, सीधे बल्ले से खेलना चाहिए। बड़ी गलती करते हुए और हमेशा भी बड़ा हुआ है यहाँ पर, विकेट गंवा दिया अपना रौनक ने। और तौसीफुल खान की पहली सफलता और 67 पर 3 एथलेटिक कैंगरूज काफी मुश्किल में यहाँ पर।
बार फिर से। और ये हवा में खेला वो शॉट, एक ही रन। शॉट और ये 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। क्षेत्र रक्षक के पास कोई मौका नहीं। जबरदस्त प्रहार किया ये 4 रनों के लिए वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। सूर्यकांत की तारीफ करनी होगी, फ्लाइट देने से जरा सा भी घबरा नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर गेंदबाज की ये निशानी होती है। अंदरूनी किनारा लगा और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर शायद। यहाँ कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं है और कभी कभी इस तरह के रन भी मिलते हैं बल्लेबाजों को। आसिफ सावनी वहाँ पर भाग्यशाली मान सकते हैं अपने आप को। अभी ओवर की समाप्ति, थोड़ा सा महंगा ओवर 10 रन बने इस ओवर में। 78 पर 3 हो गया स्कोर 12 ओवरों के बाद। रन रेट अभी भी सिर्फ 6.5 का ही है और अच्छा ये संकेत नहीं है कैंगरूज के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। 8 ही ओवर बचे हैं और 130 रन चाहिए अभी इस मैच को जीतने के लिए। 131 रन सिर्फ 8 ओवर। 16.25 का आवश्यक रन रेट। रन गति तेज करने के अलावा कोई यहाँ पर विकल्प नहीं है। पहली गेंद और ये आउट। जी हाँ, यहाँ पर जिगर सोनी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विफल हुए और अपना विकेट दे बैठे और एक अच्छा कैच लिया यहाँ पर। 78 पर 4 हो गया स्कोर। तो सिर्फ एक और सफलता यहाँ पर, इनका दूसरा विकेट। जी हाँ, दूसरे ओवर में ही सिर्फ अपने 2 विकेट ले चुके हैं और एक बड़ा यहाँ पर विकेट मिलता हुआ रूप में। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। 78 पर 4 हो गया स्कोर। बने रहिए हमारे साथ।
मैच अब धीमे धीमे क्वांटाई टाइटंस के पक्ष में गिरता जा रहा है, कैंगरूज के हाथ से फिसलता जा रहा है। बड़ा शॉट यहाँ पर ध्रुमल का, कप्तान ने पहली गेंद पर एक डॉट बॉल खेलने के बाद सीधे हाथ में कैच थमा दिया है लॉन्ग ऑन के। और तौसिफ का तीसरा विकेट, ये इस ओवर में दूसरा विकेट इनका, आसान सा कैच दे दिया ये। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यहाँ पर ये चूक हो गई। और ये पांचवा विकेट गिरता हुआ 78 पर 5, ज्यादा देर नहीं टिके क्रीज पर। बल्लेबाज विकेट की तरफ जाते हुए एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बन रही है हमारे साथ। हवा में पहला शॉट खेला और बच गए, तो सिर्फ तीसरा विकेट हुआ था इस ओवर में। अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस ओवर में। अंकित शाह हैं, तो पहले ही 3 विकेट ले चुके हैं अपने सिर्फ दूसरे ओवर में। अच्छी गेंदबाजी, इस बार तेज गेंद डाली यॉर्कर लेंथ। खेला वो शॉट, क्या आउट हो जाएंगे? जी हाँ, बहुत ही आसान तक दिया सूर्यकांत ने, उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया। और ये तौसिफ का इस ओवर का तीसरा विकेट और उनके स्पेल का चौथा विकेट। सिर्फ 2 ओवर में 4 विकेट ले चुके हैं तौसिफ खान। और अंकित शाह ने भी ज्यादा यहाँ पर योगदान नहीं दिया, एक भी रन नहीं बनाया। और 13 ओवर के बाद स्कोर 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर अब मैच एक औपचारिकता ही लग रहा है। 4 विकेट बचे हैं इस मैच को खत्म करने के लिए। विराम लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। 78 पर 6, 13 ओवर के बाद कैंगरूज। और ये बेहतरीन शॉट, 4 रन पहली गेंद पर। जबरदस्त प्रहार यहाँ पर कमलदीप को लाए हैं आक्रमण में कप्तान अभिमन्यु खन्ना। और आती स्वागत किया गया चौके से आकाशवाणी
बल्लेबाज और हसित सावनी है स्ट्राइक पर। पर 6 हो गया स्कोर। अच्छी वापसी, डॉट गेंद। शॉट, 4 रन एक बार फिर से मिलेंगे। आगे बढ़कर खेला उसे पॉइंट के क्षेत्र में। दो चौके इस ओवर में। इस बार 2 रन, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेलकर आसानी से 2 रन लिए। शॉट इस बार, क्या 2 रन मिलेंगे या चौका होगा देखना है। 4 रन मिल गए यहाँ पर, जबरदस्त बल्लेबाजी। काओ कॉर्नर की दिशा में एक और बेहतरीन शॉट और खराब ओवर यहाँ पर, पहला ही ओवर कंवलदीप का। 14 रन दे चुके हैं 5 गेंदों पर, 3 चौके खा चुके हैं आते ही। तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं गेंदबाज के तौर पर, वो भी जवाब में बेहतरीन तेज गेंदबाज है। वापसी कर पाते हैं। बढ़िया शॉट एक बार फिर से, एक ही रन। Backlight, Tossable bowling his 3rd over. He's been on fire, taken 4 wickets already. This is just his 3rd over. Has done the major damage here. Swept nicely, but that should just be a
16th over, 95 for 6 after 15. Last 5 overs remaining in this match have now become a mere formality for Quantei Titans to end. They are on top of this match completely. Coming into bowl, his first over, he starts off with a wide, the captain bringing himself into the attack. That's a good ploy. When you have the match in your hand, you can definitely try out a couple of bowlers for the knockout stages. Oh, that's a good shot in the air, but there's a fielder out there. Just a single. That's a very good shot, comes down the track, will be a boundary for sure. There's no fielder out there. Savani is taking it to the bowlers. That's a 100 up for Jfsc Kangaroos with that boundary. Plays the aerial shot wonderfully well towards the deep covers for a boundary. Oh, he's just missed that off stump. Very close margin. Coming down the track, trying to hit the big one. This time a boundary scored again by Hasid. He's reached 30 of just 21 deliveries in no time. Over 106 without loss. Beg your pardon for the loss of 6 wickets. Last 4 overs remaining. And Kawaldeep gets his first wicket. Jfsc Tsl going back to the pavilion. Playing very well, but good delivery by Kawaldeep and playing across the line. Losing his wicket. Gets cleaned up on the first delivery of Kawaldeep's second over. It's a good comeback by the bowler. Did not bowl the first over nicely, but what a start in the second over. Getting a very good batsman out on the very first delivery of the over. 6 for 7 Jfsc Kangaroos. Jfsc coming into bat now. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned.
matches left in this match, but actually Kangaroos should look to score as many runs as possible. Oh, and it's cleaned him up. Wonderful piece of bowling. Kavaldeep is on fire. Two good deliveries and both of them taking wickets in this over. Kavaldeep bowling a wonderful over. So the 8th wicket falling down. Shah not contributing much there. Batsman on strike again, and Kavaldeep bowled a wonderful delivery. Fielder misses that. No run taken. This is 17th over, 8 wickets have fallen. Viren Shah coming into bat now. Oh, he almost got him there as well. Brilliant bowling by Kavaldeep. He's taking to basics now. That's what is causing problems to the batsman. It's really good bowling by Kavaldeep. Oh, and what a yorker this time. Absolutely brilliant. That's the end of a very good over by Kavaldeep. A brilliant over by wonderful bowler. 17 overs have been bowled, 106 for 8. What an over, and a maiden as well. So 2 wickets and a maiden over. Couldn't have been a better over. In the entire match, Kavaldeep bowls the best of the match till now. What a comeback by him after he gave away a lot of runs in the first over that he bowled. Absolutely amazing. Oh, and that's a very bad delivery. Should be a couple of runs apart from the wide that he's bowled. Let's be added to the tally. And we have to bowl that again.
deliveries remaining in this match. Quick single taken by the batsman. Coming back for the second as well. Good work there by both the players. Was played towards the point. Fielder tried to get them out, but instead gave away an extra run. Doesn't matter, however, only 11 deliveries remaining in a lot of runs. 91 runs required to win. 90 runs required to win this match. Oh, and that's edged and go to the boundary. Oh, and the fielder couldn't stop that. He tried his best, but Akashvani gets a boundary. Kavaldeep again going for some runs here. This is his third over. He's sinusoidal kind of a spell here. The first over went away for a lot of runs, and then a maiden over with 2 wickets in that. This time. That's a good shot again. Will be a boundary. What a shot that is! Wow. He's just used the pace of the bowler and helped it towards another boundary in the third man region. That's a wonderful piece of batting by Akashvani. By the bowler. Dot delivery, almost a yorker there. Good shot, just a single this time. That is, should be a boundary. One mouse into the fence. Wonderfully played straight down the ground on the last delivery of his third over. Another expensive over. 15 of that. 3 boundaries in that. Kavaldeep has had an inconsistent spell today. He's taken 2 wickets. Last over remaining in this match. Score is 131 for 8 after 19 overs. Take a quick break and be back. So stay definitely behind the 5th wicket. Oh, and he gets the 5th. Oh, probably no. Trying to
this time he's got him. Seems no, again he's not out. Will he be able to take his 5th wicket? This is a very crucial situation for Tsl. He bowled a wonderful spell. Oh, it was a quicker one. In the air this time, and will be a boundary. That's a good shot. Wonderfully played in the air over and above the covers fielder's head. Good shot again. And this is the last delivery. Will he be able to take? His 5th wicket? No, he couldn't take the 5th wicket. Just a single. What a spell by Tsl. Takes 4 wickets in 4 overs, and that's the end of the match. 136 for 8 is what Athletic Kangaroos could manage, and the match has been won comprehensively by the Quantei Titans by 71 runs. And we thank all the viewers who have been watching this game live, the YouTube channel of Jfsc, and also the spectators who have come all the way to the locations to watch this game live at the Fatima Cricket Ground. We'll be back with another match in the TSL very soon, and this is your commentator Shalin Gupta signing off. Once again, thanking you all.